Good day, good morning. This is इंजीनियर सूरज सिंह स्पीकिंग फ्रॉम भारत इंडिया। मैं सूरज सिंह सिविल इंजीनियर भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 दिन के करीब 2:32 2:32 PM in this country Bharat India, and this is Suraj Singh, civil engineer speaking to you, and topic is known to you is regarding what's happening in our parliament and what's happening in elections. Both issues are there. हमारे देश की पार्लियामेंट में, संसद में क्या हो रहा है और हमारे देश में जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा, और क्या हम उस तरफ जा रहे हैं, उस आदत की तरफ जो इजराइल जा रहा है। एक बहुत बड़ा इशू है ये, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, दिस इज actually you know very well what's happening, but still I want to speak about that. Our parliament is great. It is constitutional body. There shall be a parliament is written constitution, and there are three institutions in this parliament. Parliament itself is institution, super institution, but there are three institutions in this parliament. हमारी पार्लियामेंट में तीन तीन संस्थान हैं। पार्लियामेंट अपने आप में संस्थान है, लेकिन उसके अंदर तीन संस्थान हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और महामहिम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। You can say Lok Sabha plus Rajya Sabha plus President of this country equal to Parliament. This is definition according to our Constitution. हमारे संविधान के हिसाब से परिभाषित ऐसे ही किया गया है। राष्ट्रपति महोदय पार्लियामेंट से अलग नहीं है, और लोकसभा राज्यसभा दोनों हमारे हाउसेस हैं जिसमें एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बैठते हैं। सांसद में दो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एक लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरे राज्यसभा के अध्यक्ष। Presiding officer of Council of States, or that is called Rajya Sabha, and that person is already appointed through vice presidency. Our vice president means chairman of Rajya Sabha, and Lok Sabha chairman or speaker means is elected by House of Lok Sabha, and election of this speaker or presiding officer, chairman of Rajya Sabha, is done by election commissioner. Election commissioner is in charge of election of our president, our vice president, and MLAs, MPs of Lok Sabha, MLAs of all state assemblies. This is prerogative, this is charter of our election commission. Various charters are there. The name is not charter. These are, you can say, definitions of these designations in our constitution. हमारे संविधान में परिभाषित किया गया है कि कौन क्या है। As I said before also, MP for me is very powerful. Every MP, member of parliament, जो सांसद कहते हैं, वो बहुत पावरफुल होता है, और उसका मजाक हम नहीं ले सकते, क्योंकि एवरेज 10 से 15 लाख को रिप्रेजेंटेशन एक एमपी देता है। हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ या 140 करोड़ या 130 करोड़ जितनी भी है, उस हमारी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 543 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी 10 से लेकर 15 लाख तक की रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व एक एमपी करता है लोकसभा का। राज्यसभा का अलग बात है, लेकिन जो चल रहा है आजकल बहुत गलत चल रहा है मेरे हिसाब से। किसी पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करता, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूं, लेकिन मैं इस देश का सदस्य हूं। इस देश के 140 करोड़ में मैं भी एक हूं, आप भी एक हैं। आई एम वन ऑफ दोज 140 करोड़ और वट एवर इट इज, एंड ऑन दैट बिहाफ आई एम टॉकिंग इन कैपेसिटी ऑफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं इस देश के नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूं। एक गंगा बह रही है सरकार की तरफ से, हमारे दोनों हाउसेस की तरफ से, कि एमपीस को कोई जरा सी बात हो जाए तो निकाल दो सत्र के लिए उस सभा से। लोकसभा में कोई बात होती है तो लोकसभा से आउट कर दो, जिसको वो कहते हैं सस्पेंशन, और इसी तरह से राज्यसभा में कोई बात होती है उनको वहाँ से आउट कर दो। कितना अच्छा है, इतना अच्छा डिसिप्लिन, इतनी अच्छी क्वालिटी हमारे देश की संसद की है,
तारीफ तो करनी चाहिए. Should be appreciated, right? And I am appreciating that we are having very quality system in our houses. Means you can suspend MP. Is it so easy? Yes. हम अपने एमपी को सस्पेंड कर देते हैं, जाइए आपने ऐसा कहा है, जाइए आप, जाइए जाइए. ऐसी पावर कौन सी है? आप कहेंगे ये तो आर्बिटरी पावर हो गई. हाँ, ये आर्बिटरी पावर ही है. ये दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास है. लेकिन इतनी पावर वो बढ़ चुकी है आज के समय में कि एक समय में आप एक ही सत्र में कुछ दिन में 146 या 150 एमपीस को पार्लियामेंट के हाउस से बाहर निकाल दें. कितनी छोटी बड़ी बातें हैं, बहुत छोटी बात है. और वो भी किसी सरकार के दल के नहीं, दूसरे दलों के, जो दल सरकार में नहीं है, जिसको हम विरोधी कहते हैं. विरोधी दल सब गलत हैं, सब गलत हैं. विरोधी दल, उनके एमपी सब गलत हैं. उनको काम करना नहीं आता, उनको बोलना नहीं आता. और जो सरकार के तंत्र के हैं, जो सरकार के एमपी हैं, सरकार के एमपी का मतलब जो सरकार के साथ हैं, उनकी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, उनके अलाइज के हैं, वो सब ठीक है. एक ऐसा फार्मूला तय हो गया है बिना किसी संविधान के, कानून के, नियम के, कि हम अगर कुछ भी करेंगे, हम सरकार के हैं तो गलत नहीं है, और जो आप करेंगे विरोध करेंगे तो वो गलत है. इतना अच्छा है सिस्टम, देखिए ना. आप बोलेंगे ज्यादा, आप बाहर जाइए. आप वेल में आएंगे, आप बाहर जाइए. और यदि कोई दूसरी पार्टी, सरकार के आदमी वेल में आते हैं तो कोई बात नहीं है, तो चलेगा. Really, it is very much surprised, and people of this country have been tolerating this. Really, I'm sorry, I'm speaking English. People of this country have been tolerating this and have tolerated already, but no one is speaking. That is unfortunate. After all, what for MP is there? What is purpose of MP? Do we know? Yes, it is given in Constitution. And what is purpose of presiding officers? It's also given in Constitution. Presiding officer has right, but this right should be justified. If that person exercises right, if presiding officer exercises right, that exercises should be according to law and not by arbitrary decision. We understand that our presiding officers in both houses are not subject to report to government of this country. They are not required to report to government, but they are required to report to house and their houses and president of this country. This is law. Presiding officer has nothing to do with the government except coordination of procedures, coordination of affairs of houses, and not to be controlled by government or by Mr. Prime Minister. But it is happening, virtually it is happening. And that is very detrimental for future of our country, future of our democracy, because we are a democratic country. हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चल रहा है काम. कुछ भी कर लो, आप एक स्कूल के टीचर को नहीं बाहर निकाल सकते, लेकिन आप देश के एमपी को बाहर निकाल सकते हैं, जबकि उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया. उसने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस किए और उसको बाहर निकाल दीजिए. मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन करने का एमपी का अधिकार छीना जा चुका है. वो अधिकार तभी है जब वो सरकार के कामों की तारीफ करे. That is only left to internal extent. If you are in favor of government, if you support something the government proposes, then you are right person even though you belong to opposition. But that is not going to work. I'm very serious about this. I'm not interested in any politics here. But MP is MP. MP, if you count, is a member of legislature and not member of government. We know very well, and I explained you before also, and you know very well. हमारे देश का एमपी सरकार का तंत्र नहीं है, लेजिस्लेचर का तंत्र है. लेजिस्लेचर का हिस्सा है वो, चाहे वो बीजेपी का एमपी हो या वो कांग्रेस का एमपी हो या किसी का भी एमपी हो, उसको सरकार से कुछ लेना देना नहीं है. और यही बात हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे लागू होती है. प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस का मेंबर तो होता है, लेकिन सरकार का तंत्र का हिस्सा नहीं होता. वो होता है तो उन्हीं सदस्यों में, उन्हीं सांसदों में एक होता है जो उसको सीट पर बिठाते हैं. ये बात को समझ लेना चाहिए. हमारा सांसद
बड़ा है प्राइम मिनिस्टर से, सरकार से। ये बात भी युवाओं को समझनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं कहा जाता है। किसको चुनेंगे प्राइम मिनिस्टर? जबकि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हमारे संविधान में कहीं नहीं है। लेकिन बस धक्का पेल चलता है, ट्रेंड जैसा बना दिया। प्राइम मिनिस्टर तो हमारे देश के इतने अच्छे हैं कि वो अपने नाम पे वोट मांगते हैं कि मेरे चेहरे पे वोट दे दो। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है हमारे देश की पब्लिक का, वो ठीक नहीं हो सकता। हर एक को यही है कि ये नहीं तो कौन, एक ऐसा फार्मूला जमा दिया गया है बोलने के लिए, जबकि कानून में, नियम में, संविधान में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो, मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। हम जो जो वोट देते हैं, जो वोटर वोट करता है, मताधिकारी मत देता है उस उम्मीदवार को जिसको वो एमपी चुनना चाहता है, वो उसको वोट देता है चुनने के लिए उस उम्मीदवार को। जबकि लोग ये समझते हैं आपने प्रधानमंत्री को इसको देना है वोट, या जो प्रधानमंत्री बन सके उसको वोट देना है। बस यही एक एक जड़ है जो बीमारी पैदा कर चुकी है। और ये आज से नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज से है। मैं इस सरकार को भी दोष नहीं दूंगा उसमें। मैं दोष तो लोगों की सोच को देता हूँ कि हमारे लोग संविधान नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्या प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आता। हमारे यहाँ करोड़ों पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मैथमेटिशियंस सब हैं, लीगल लिमनरीज, लॉयर्स, जजेस सब हैं। वो जानते हैं, लॉ वाले तो जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। हम किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते, ये बात लोगों को शायद पता नहीं है। बस एक गलत फहमी के शिकार हैं कि ये सीट पे नहीं तो कौन हो। आपको क्या लेना है कौन सीट पे होगा? मेरा सुना, आपका रिलेशन एमपी से होना है, आपका रिलेशन एमएलए से होना है, आपका रिलेशन ना तो प्रधानमंत्री महोदय से होना है, ना ही हमारे देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री से होना है। आपने अगर कुछ करना है तो अपने एमपी के साथ, और वो भी लोकसभा के एमपी के साथ। राज्यसभा से तो बहुत कम वास्ता, कोई पढ़ता ही नहीं। अगर आपको कोई पार्लियामेंट से रिक्वायरमेंट है, अपनी पार्लियामेंट से अपने एरिया की या किसी और बात की, या ऐसी आपकी प्रॉब्लम है कि जिसमें एमपी इन्वॉल्व है, तो आपको एमपी के पास जाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे भी तो वो एप्लीकेशन आगे भेज देगा, वो फिर वहीं जाके रुकेगी जहाँ रुकना चाहिए। आई एम सॉरी। So, my dear friends, I just want to tell you that, not tell you, just inform you that there is no election of prime minister, and therefore we should not worry about election of prime minister. And these political parties should also realize this fact. They know it very well, but they don't want to speak that one. They have lawyers in their parties. They know what is constitution, but they do not talk about that, and that's unfortunate. Our political, even Congress, they spread disseminate misinformation, and it happened, started from Indira Gandhi time, that इंदिरा को वोट देना है या किसको वोट देना है। आज भी वही है, मोदी को वोट देना है या किसको वोट देना है। पहले क्या होता था, जो भी होता, अटल बिहारी जी को वोट देना है या किसको वोट देना है। वो ढर्रा जो बन गया, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हमारी आदत नहीं है। और अब तो जब से इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, तब से तो लिखना छोड़ा, पढ़ना छोड़ा, सोचना भी छोड़ा। बस मोबाइल पे भौंकते रहो, बोलते रहो। हर चीज़ मोबाइल से हो गई और हम मोबाइल के गुलाम हो गए। मैंने सुना राहुल गांधी को जंतर मंतर से बोल रहे थे। अच्छा लगा एक बात उन्होंने जो कही कि उन्होंने कोई सर्वे कराया है कि आज का युवा कितने घंटे मोबाइल यूज़ करता है, कितने घंटे इंटरनेट यूज़ करता है। तो उन्होंने कहा कि 7.5 घंटे उनके सर्वे के हिसाब से, 7.5 hours young people or those who are unemployed, or you may say not employed or not employed, but 7.5 hours on an average, every young boy or young girl uses mobile or internet. Now you think of 7.5 hours somebody uses mobile. अगर वो 7.5 घंटे मोबाइल यूज करता है तो what work that person does? This means that person does not do any work. Because if you have a job, you have to do job for 7 hours, 8 hours, 9 hours, 10 hours. But you're just using mobile for your 7 hours, 8 hours. This means you are not having any job. You are unemployed, absolutely
unemployed, and 7.5 of use of mobile means you are going to loosen your memory, you are going to loosen your mental activity, and this will harm your interest in future. कई बार मैं ट्रेन में मेट्रो में किसी से बात बात कर रहा था, ऐसे ही एक पीएचडी महोदय, एक फीमेल थी, तो बात ऐसे ही चल गई, एक साहब भी बैठे थे कि भाई मोबाइल ने तो दिमाग खराब कर दिया लोगों का। सच बात है, मोबाइल ने दिमाग खराब कर दिया। मैं मोबाइल की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ सिर्फ। ना आप सोच सकते हैं, ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, ना क्वेश्चन कर सकते हैं। यही अचीवमेंट है मोबाइल का। ओनली वन अचीवमेंट दैट यू कैन नॉट थिंक, you cannot concentrate, you cannot calculate, you cannot memorize, you cannot give logic, you cannot raise question, and that is what is happening with use of continuous use of excessive use of mobile. And that's why our politicians are getting undue benefit of that. Spreading information, dissemination of information is very important in our country. We have to disseminate information. It's not in our country, everywhere else in this world. Information must be disseminated. But what sort of information? What should be quality of information? That's a question mark. किस तरह की सूचना हमको लोगों को देनी चाहिए और किस तरह की नहीं देनी चाहिए? That is another part. Young people are not, you can say, they are oriented in a way of intellectualism, but they are oriented in energy. Young people are very energetic, but that energy should go to what? That energy should go to constructive work. But they are giving misinformation, and particularly on WhatsApp. You see, so many messages come from WhatsApp, university, or other sources. Misinformation is spread among them because they are very young. They may be around 20 or 18 or 16 or 15 or 25. It means they do not know any history or they don't know past political history, and they are misled by that. They believe that that is true. That's what's happening. Misinformation dissemination is very dangerous for our country, and not only for our country, for every other country as well. And this is being used as a weapon. Sorry, there's some disturbance. This should be avoided. However, I was going to Parliament, I was talking about that, what has happened last 2 or 3 weeks. It's unfortunate, actually, and I'm not going to criticize anybody, but what I'm saying is, I'm talking about suspension issue. This is quite illogical. बिल्कुल गलत हुआ है। एक आदमी गलत सकता है, गलत बात कर सकता है, पार्लियामेंट में 2 आदमी गलत बात कर सकते हैं। हर रोज हर व्यक्ति गलत बात करता है, क्यों? पॉसिबल है? 146 MPs are out. 146 say 150 MPs are out. I think 97 MPs or 100 MPs, you may say, on from Lok Sabha, and remaining from Rajya Sabha. 150 MPs from House of Parliament. There are about 543 plus 250, say 800. 800 and 150 are out, 160 is there. About 20% MP are out. This means if it continues like that, all opposition will be out, right? And that's for sure too. Though session may end today or tomorrow, I don't know, but these people, if continue, say for 1 week more or 2 weeks more, if session extended, we shall be out. What do you think about this? You are educated, you are intelligent, you can think, we can calculate, we can understand reason behind that or no reason behind that. If there is reason behind it, why we reach that reason, state of that reason. If that reason doesn't exist, what is reason that? What's the reason then? This have been suspended. अगर वहाँ कोई बात है, कोई लॉजिक है कि उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये तो क्वेश्चन उठता है। कुछ लोग कहेंगे सही किया, कुछ लोग कहेंगे गलत किया। मैं उस तरफ भी नहीं जाना चाहता। सही किया या गलत किया, वो अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि हम इतने ऊंचे नहीं हैं कि दूसरा क्या सोचता है हम क्या कहें। जितनी नॉलेज है उतनी बात करेंगे आप, कोई भी है, मैं भी हूँ चाहे। जितना ज्ञान है मुझ में, whatever knowledge, whatever level of knowledge I have, I'll talk only on that line. I cannot think more than that. And thinking is a difficulty now. Thinking itself is a difficulty. That's why I refer to the example of mobile use. If you use mobile for hours and hours, just like 7.5 hours, 8 hours throughout night, and you use mobile, then what shall happen to your memory? And that's a question mark. Means in the age of computer, already we are suffering. We've been suffering from that, and now we have to suffer this way as well.
So what is purpose? And that is very, very important. Reason is no, what happened means it's just very small issue. Means question and answer should be there. Our home minister or prime minister didn't about that. Well, it's their problem. Why didn't about that? But they should have complied with. They should have respected demands of MPs. And on that account, I would say, I do not accept conduct by our presiding officers as well as by prime minister and home minister. They insulted our houses because it is their duty. This is duty of our ministers to to respond to MPs, but they did not do the job. I'm not going to politics again. I'm saying I'm not going to say they should not do it. That's their duty. Whatever they should have said, simply they should have said. It is respect of house. It is respect of democracy. It is respect of nation. It is respect of all voters. Why do you want to run away? What's your personal objective in that? My question is that. My very, very, very difficult question, but it's the right question. What is personal interest of prime minister or home minister or presiding officers that they are doing like this? What for? They don't respect the nation. Why? They don't respect me. I'm a voter. There are 140 crore voters. I'm sorry, about 100 crore voters. Don't you respect? क्या आप हमारे देश के पब्लिक को रिस्पेक्ट नहीं देते? क्या हमारे देश के सांसद को रिस्पेक्ट नहीं देते? क्या प्रॉब्लम है आपको? आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं आके बात करते? और इतने एमपीस को निकालने का मतलब क्या है? अगर आपने इतने एमपीस निकाले तो आपको हाउस से सस्पेंड कर देना चाहिए था. आप बिल भी ला रहे हैं, उनको पास भी कर रहे हैं. क्यों भाई? मतलब ये कौन सा तरीका है कि आप 20% एमपीओ को भगा दें या 25% को भगा दें और फिर बिल लेके आए? ठीक है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि आप नहीं ला सकते बिल, लेकिन एक एथिक्स होते हैं, एक कंडक्ट भी तो होता है. माना अगर उनका कंडक्ट खराब है, मान लेते हैं कि 140 या 150 एमपीस का कंडक्ट खराब है, आपका कौन सा अच्छा कंडक्ट है? संविधान की शपथ उन्होंने भी ली है और आपने भी ली है. हमारे देश के राष्ट्रपति जी की शपथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शपथ होती है, मैं इस देश के संविधान को रक्षा करूंगा, मैं इस देश के संविधान की रक्षा करूंगा. सिंपल शब्द होते हैं और यही शपथ हमारे औरों की होती है. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की और मंत्री की क्या शपथ होती है? उसकी बहुत लंबी शपथ होती है कि मैं वही करूंगा जो संविधान में लिखा है. मेन शपथ यही है कि मैं वो करूंगा जो संविधान में लिखा है. और ये शपथ सबकी है. ये शपथ सिर्फ राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को छोड़ के बाकी शपथ का मतलब यही होता है कि मैं वही करूंगा जो संविधान में लिखा है. तो संविधान में कहां लिखा है कि आप 150 एमपी निकाल दीजिए? निकाल सकते हैं, रूल्स में है, लेकिन लॉट क्या हो गया? ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया इन एमपीस ने जो कि आपने निकाल दिया? ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है, पब्लिक में बन रहा है. लोग इसके फेवर में भी होंगे, अपोज नंबर. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फॉर अगेंस्ट होने दो ना. मैं फॉर की बात कर रहा हूँ, अगेंस्ट की. मैं तो बात कर रहा हूँ लॉजिक की. आप बताइए लॉजिक क्या है इसमें? क्या कारण है जो सही बना है? प्रैक्टिकली बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताइए क्या लॉजिक है कि आप इतने लोग निकालते थे, को एक या दो निकलता तो बात जस्टिफाई होती, चलो भाई गलत था या उसने गलत बात कर दी. और जो गलत बात करते हैं वो तो आज भी वहां बैठे हैं, आज भी बैठे हैं. धनखड़ बैठे, वो सॉरी क्या नाम है उनका, एक जो मुस्लिम के बारे में जिन्होंने कहा था, नाम भूल गया उनका, वो तो अभी बैठे. और वो बैठे नहीं बैठे वो जाने, मैंने उसकी बात कर रहा. मैं तो बात इनकी कर रहा हूँ, इनको आपने निकाला है. आपने तो ऐसे निकाल दिया जैसे गाजर मूली फेंक दो बाहर. आर दे वेजिटेबल्स? Are they tea, coffee, cups? What they are? I don't understand. You are ordering as if you are God, you are Yamraj.
You are sending them out, you are throwing them out, suspending them out, and who shall suspend you? My dear Speaker, my dear Presiding Officer, who shall suspend you? Means you have got certain privileges, certain controlling rights. Yes, you have controlling rights, but remember that is also not absolute rights, not absolute right. आपने कंट्रोलिंग राइट तो संविधान के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से ले लिए। आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे आप। अजीब बात है। फिर आप बिल भी ला रहे हैं, उनको अप्रूव भी कर रहे हैं, तो उनकी अप्रूवल या डिसअप्रूवल का क्या जो निकल गए? व्हाट अबाउट अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ दोज एमपीज हु हैव बीन आउट? उनका अधिकार छीन लिया आपने। आप कहेंगे कमेटी में भी नहीं आएंगे, वो वीवर्स गैलरी में भी नहीं आएंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे जो उनको करना था। आपने उनको एक तरह से सीट से खाली कर दिया कि आप हमारे एमपी हैं नहीं, मतलब तो यही हुआ ना। सस्पेंशन तो आपने की, लेकिन सारे उनकी ड्यूटीज भी आपने खत्म कर दी। कल की मैंने न्यूज पढ़ रहा था कि वो कुछ नहीं करेंगे, अब हाउस में नहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कमेटी में नहीं जाएंगे, कोई भी कुछ नहीं करेंगे। दे शैल नॉट डू एनीथिंग व्हाटएवर इज गोइंग टू देम ऑन दैट जॉब डिस्क्रिप्शन, मींस व्हाटएवर दे हैव टू डू दे कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस मींस दे डू नॉट हैव नाउ डेजिग्नेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, right? This means you have reduced the strength of parliament, right? They are not absentees, right? They are not absentees. Now you will count only majority of reduced parliament. Why? आपको बिल पास करने का हक नहीं है मॉरली। प्राइम मिनिस्टर को भी हक नहीं है कि बिल लाए जब तक वो एमपी वापस ना आए, लेकिन आप तो बिल ला रहे हैं, पास भी कर रहे हैं। उनका क्या? उनका क्या? ये सब क्वेश्चन है, लीगल ना सही, एथिक्स सही। आप एथिक की बात कर रहे हैं ना, कंडक्ट की बात कर रहे हैं, हम भी कंडक्ट। आपकी कंडक्ट का क्या? व्हाट अबाउट योर कंडक्ट मिस्टर प्रेसिडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मिस्टर स्पीकर, चेयरमैन, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मिनिस्टर्स, मिस्टर पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर्स, एंड ऑल्सो योर एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री? You are responsible for that because you are presiding officer of both houses, not one house. You are integral part of parliament. Without your signatures, no bill can be transformed to act. You are silent. You don't value MPs. You don't value people. This is also a question. I don't understand what is happening under your presidentship. I don't understand. Why don't you stop it? Your oath said you shall protect constitution of this country. This is your oath. Oath administered to president of this country. आपको संविधान की रक्षा करनी थी। क्या रक्षा हो रही है? जब बोलने नहीं दिया जा रहा, क्वेश्चन नहीं करने दिए जा रहे, तो संविधान चल रहा है क्या? डेमोक्रेसी चल रही है क्या? सॉवरन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SSSDR काम कर रहा है? कहां है वो सॉवरन? सॉवरन कहां रह गया? आदमी बोलने नहीं दिया जा रहा है, बात नहीं करने दी जा रही है, क्वेश्चन नहीं पूछने दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते नहीं हाउस में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो SSSDR कहां रह गई डेमोक्रेसी? कहां रह गया हमारा सोवरेन स्टेटस? कहां है? किसी को भी निकाल के बाहर करो। आपने 150 निकाले, कल को 200 भी हो जाएंगे, 250 भी हो जाएंगे, बाकी तो आपके हैं, बाकी तो आपके, वो तो निकलेंगे नहीं। उनका होना या ना होना तो बराबर है। हमारे देश में आज की तारीख में बीजेपी के सांसदों का तो होना ना होना बराबर है, क्योंकि उन्होंने तो
पार्टी ही काम करना है, मिल सतवानी है, हा 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 करना है। और क्या करना है उन्होंने? उसके अलावा तो कुछ नहीं करना उन्होंने। तो उनका एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, उनकी प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस गॉट नो मीनिंग to contribute for smooth running of democracy and democratic principles. This is very important I'm talking about. चाहिए क्या? पहली बात तो गलती प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हुई है, गलती होम मिनिस्टर की तरफ से हुई है, गलती प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से हुई है, जिन्होंने हमारे विरोधी दलों के एमपीस की बेइज्जती की। बेइज्जती की, साफ बेइज्जती है। मान लेते एक दो आदमी गलत हो सकते हैं कि सारे गलत हैं? कुछ गलती अपोजिशन वालों की भी हुई है। अरे भाई रिजाइन दे रहा था, बात खत्म। ऐसी सरकार के साथ क्या चलाओगे देश, जो सरकार काम ही नहीं देता, आपको सुनते नहीं है वो। मैंने तो 2019 में कहा था, आई जस्ट पोस्टेड इन 2019 व्हेन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर रिटर्न टू पावर अगेन, resign, they shall not respect you. Nobody listen because you are interested in money. You are interested 5 years. Still you are interested. Just 2-3 months are left. Forget them. Go, leave it for me. Resign and go. है ताकत। 3 महीने की सैलरी चाहिए आपको। Resign, let them work alone. It shall cause a pressure on our institution of parliament and president to take action. The whole world shall know what's happening here. It's going to be in Israel. Yes. Where there is no democracy. There is no Supreme Court in Israel. Oh, every decision goes to favor of government. Palestinians are rejected. Same thing is happening here. Who bothers here opposition? Who is bothering? Nobody bothering. And our election commissioner, great institution. मेरा अपील है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, महोदय से, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस महोदय से कि इस तरफ ध्यान दें। मैं कहूँगा हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, महामहिम से, कि जो भी बिल आपके पास आ रहे हैं अप्रूवल के इस टाइम के, जबकि यहाँ कोई नहीं है अपोजिशन का या कोई नहीं है 150 एमपीज में से, कृपया इसको कॉन्सेंट ना दें। Please don't give consent to these bills. Let these bills come back into parliament again when these suspensions are reinstated. Let these be voted out again. It is in the interest of our country's democracy. Otherwise, there is no meaning of democracy in this country, in this state, what's happening. We don't want to allow government to play with people. We don't want to allow government to play with MPs. They are playing. What is right, what is not right, that's another question. I'm not talking of security, I'm not talking of what happened, but I'm talking of something which should not be accepted. That's what I'm talking about. Hello? Yes? बाहर में जा रहे तुम यार, यही काम है इनको, हम नहीं कर देंगे यार। Yes, unnecessary phones ahead with this. So, my dear, what I was saying, our president, our president should not give consent to these bills which parliament shall send to them. I mean to say Lok Sabha and Rajya Sabha shall send, because these are without vote of our 150 MPs. 150 MP, 150 number of MPs are significant figure, and they must be respected. You cannot ignore people. If you count, it's about, it is about, you can say, if you have 150 MP, take 15 lakhs for one. So it is about 22 crores people, voters. 22 crore voter you cannot neglect. How can you neglect that? 22 crore citizens or voters, you should not neglect. And I will appeal to our Supreme Court, Apex Court, that take this issue yourself. This is not right. You know it very well. You are custodian of our constitution. You have to protect rights of citizens and rights of everyone. And it's not that one.
I don't care if some case comes to you or doesn't come to you. You are yourself a citizen also. You are citizen also. You are CJI, you are SC, judge, honorable judge, but you are citizens of the country also. So you take yourself this, what's happening. It shouldn't happen this way. बहुत गलत हो रहा है. It's happening in parliament and something is happening in election commission. They don't bother. Election commission doesn't bother about anything. Parliament also doing nothing. EC is doing nothing. What is happening in EC? I know. They just count. They conduct elections, which has got no meaning. Results are not right. Just declarations of victories only. I sent you files. My files about calculations must be with you. I know I shall not get any reply from Supreme Court. I send mails to you. I submitted to you my calculations in 4 tables, and I submitted to you what I wrote to election commissioner. I sent same files to election commissioner also. These files, these calculations clearly say this election is fake. Counting is fake. There is no tally of votes. No tally of votes. Very simple method it is. Even if election or no election, polling is there. Means balance sheet should be there, just like we have balance in accounts. Balance sheet. Where is balance sheet? Balance sheet means how many number of votes were polled and how many number of votes were counted. They should be equal. That's it. Is it wrong? क्या ये गलत है कि जितने वोट डाले गए और जितने वोट काउंट हुए वो एक से होने चाहिए? अगर इसमें गलत है तो मुझे बता दीजिए. वो कहाँ है? इलेक्शन कमिश्नर कहाँ देता है? मैंने तो पहली बार देखा है इस बार उनकी साइट पे जाके. एक बार चेक करते हैं क्योंकि मुझे डाउट हुआ कि रिजल्ट में घपला है. वो क्यों डाउट हुआ उसका रीजन है. अगर वो मैं शायद ध्यान नहीं देता तो मैं उस पर कैलकुलेशन ही नहीं करता. विक्ट्री कितने की क्या की वो अलग बात है. परसेंटेज का डिफरेंस है. मेन पार्टीज तो दो ही हैं, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस. बाकी तो सब दिखाने के लिए हैं. और जो वोट्स डिफरेंस बता रहा है उनकी साइट पे बहुत ही नॉमिनल है. उसको मैं इतना ज़्यादा कह नहीं सकता पर्टिकुलरली दीज 3 स्टेट्स के लिए. हाँ, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, तेलंगाना के लिए. लेकिन इन तीनों स्टेट्स के लिए तो एक मार्जिनल जिसे कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ वोट्स है दोनों पार्टीज का. इट्स वेरी मार्जिनल. In case of Chhattisgarh, it's about 4%, say round figure. In case of Madhya Pradesh, it's 8%, and in case of Rajasthan, it is only I think 2 point something, and in Telangana it is 25%. Telangana is 25% of difference. So that is right. One you can say there has been no, you may call it EM abuse or something, but I'm not say that now at this moment. Because I'm not talking about EM. EVM is a problem, but in this talk I'm not referring to EM. I'm just referring to procedure of counting of votes. See, there should be some procedure. We cannot do blindly anything. How can we do like that? We are educated society, educated nation. Election Commission also not illiterate. Candidates may be illiterate or literate, I cannot say, but what is the question mark? If you are showing 2.16% variation in votes polled by both parties, BJP got 2.16% more. In Madhya Pradesh, they got 8% more, and also 4% more in Chhattisgarh. And you know how many seats are there. There should be proportion. You may say, no, how is possible? There can be. I'm just saying, if you take uniformity everywhere, these seats should be in accordance to that variation. And even if there's no proportionality, how much it will vary? That's question mark. You can say in Telangana itself, 25% difference, 20 sites, 25% difference, 26 seats only out of 119 seats means it says something. Yes, there is variation, but not to that extent. इतनी नहीं है जितनी हम कह रहे हैं. 119 सीटें हैं, 119 seats they are there, and there's I think 26 seats difference is there, and vote says 24, 5, 1/4. So 1/4 is how much?
In 190 seats, this is 25, and I think out of 1905, 25 or 36. So 26 is, so you can say, okay, fine, it's agreeable. But that proportion is not shown in these three assemblies. And that is my question. And my not only question is a commanding question. I can challenge it. It's justified. Mathematics is not my subject. It's a world subject. It's not only that I only know mathematics, every mathematician knows, every educated person who passed mathematics must know mathematics. Maybe applications I did first time on my own formula. There's no standard formula. Election Commission must know because it's in charge. If Election Commission doesn't know mathematics, then he should not be there in that seat. How is that if he doesn't understand mathematics? I can excuse political parties. I can excuse political leaders if we don't understand mathematics. I can even excuse lawyers and honorable judges because they are not expected to know mathematics. But election commissioner is expected to know it. Returning officers are understandably expected to know mathematics. And that person who declares result must also know. And if they do not know, then there is something wrong. This means we don't have job description for them. There should be, means they are not well qualified for that position. How can they take risk of that? अगर हमारे काउंटिंग ऑफिसर को जिसने सर्टिफिकेट देना है रिटर्निंग ऑफिसर ने कि आपका इलेक्शन हो गया, अगर उसको इतना नहीं आता तो किस किस बेस पे वो दे रहा है? आप मेरा बात समझ रहे हैं? अगर हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जिसने सर्टिफिकेट देना है कि आपका इलेक्शन हो गया, आप जीत गए हैं, और उसको अगर मैथ्स नहीं आता, उसको काउंटिंग सही नहीं आती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसने सही रिजल्ट दिया? भाई हजारों मशीन होती हैं एक एक कॉन्स्टिट्यूशन, सैकड़ों तो होती होंगे, हजारों नहीं होती तो सबके आपने काउंटिंग की, आपको ये भी पता है कितने वोट पोल हुए, दोनों इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वोट पोल की इन्फॉर्मेशन है, वोट काउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, आप टैली नहीं कर सकते किस पार्टी को कितने गए, नोटा में कितने गए, इंडिपेंडेंट कितने गए, ये सबको सम करके आप देख लीजिए कितनी काउंटिंग हुई है। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? बल्कि ये तो मशीनें बता रही हैं आपको कि किसको कितने वोट मिले, तो उनको आपने एक शीट में एक्सेल में ला के सम कर दें, और अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो उसमें डाल दीजिए। तो जो वोट काउंट हुए वो वोट काउंट हुए, और वो जो डाले गए उसमें क्या टैली नहीं होनी चाहिए? मैं इसी को बैलेंस शीट कह रहा हूं। अगर आप ये बैलेंस नहीं कर सकते फिर काउंटिंग क्या कर रहे हैं आप? व्हाट इज मीनिंग ऑफ काउंटिंग? क्या मतलब है काउंटिंग का? आप लीड लिखे जा रहे हैं बस, ये कैंडिडेट इतने हजार से जीत गया, ये कैंडिडेट 50 से जीत गया, 70,000 से जीत गया, 70,000, 75,000, 500, 300। व्हाट डज इट मीन? वेयर इज रिकॉर्ड? आप कहेंगे ये हमारा सीक्रेट है, हम नहीं तो बताते किसी को। नहीं, बिल्कुल सीक्रेट, ये सीक्रेट होना नहीं चाहिए। नो क्वेश्चन, दिस इज पब्लिक प्रॉपर्टी, पीपल शुड नो अबाउट दिस। आपकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस लीड दिखा दिया, ट्रेलिंग दिखा दी, हो गया। क्यों भाई? हमने क्या लीड देख रही है? हमें पता नहीं होना चाहिए कितने वोट काउंट हुए? क्या पता आपने कितने फालतू दिए वोट, उसको कौन जानता है? यही तो बात कर रहा हूं मैं, टैली इसी को कह रहा हूं। ये मेरा हमारे महामहिम से भी, हमारे सीजीआई साहब से भी, और हमारे इलेक्शन कमिश्नर से भी, और स्पेशली उन पार्टी से जो इन्वॉल्व हैं, सबसे अनुरोध है कि इस बात पे ध्यान दें। और शायद ये पहले से भी ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो अलग रखते हो। रिकॉर्ड तो दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखाते आप? क्या जा रहा है आपका? अगर आपने काउंटिंग सही की है तो आप दिखाइए कि मैंने देखा सही की है, क्योंकि मैं चैलेंज कर रहा हूं। जो लीड इस बार आई हैं तीनों असेंबलीज की, वो लीड्स दोनों पार्टीज की अलग अलग हमने उनको बाइफरकेट करके सम करके देखा तीनों असेंबलीज में। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत गलत आंसर्स आ रहे हैं। वोट कितने गिने गए, बहुत गलत आंसर आ रहे हैं उसमें। और सिंपल फार्मूला लगाया, सिंपल कैलकुलेशन की। क्या आप बिलीव करेंगे कि 36 करोड़ वोट, 36 करोड़ वोट्स इन तीनों असेंबलीज के होंगे क्या जो पोल हुए? लेकिन tallies in relation to those vote percentage differences both parties have calculates that. आप मेरी बात को पिकअप कर रहे हैं या नहीं? मैं जो कह रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस के जो वोट डिफरेंसेस आए हैं काउंटिंग में, और जो टाली शो की गई है लीड की, आई एम सॉरी नॉट टाली, लीड्स,
जो लीड शो की गई हैं हर कैंडिडेट की जीतने की, और जो परसेंटेज डिफरेंस है उसको हमने रिलेट किया आपस में, वो बहुत सरप्राइजिंग है। और पूरे असेंबलीज की सम करके जितनी परसेंटेज डिफरेंस दिखाया गया है उससे हमने थर्ड वैल्यू निकाली जो एब्सेंट है, जो मिसिंग है। तो वो थर्ड वैल्यू है कि वोट कितने हुए, क्योंकि लीड हमारे पास है, परसेंटेज वोट हमारे पास है, तो हम कह सकते हैं अगर इतने परसेंट वोट का डिफरेंस है तो इस लीड का जो डिफरेंस आया है उससे कितने वोट होने चाहिए। तो वोट हमने निकाल लिए, दोनों पार्टीज के निकाल लिए और सम करके दोनों पार्टीज का देख लिया। तीनों स्टेट के सम जब किए तो 36 करोड़ वोट अलग अलग भी हमारे पास हैं, तीनों के सम किए तो ये आ गए। वो मैंने फाइल एक्सेल में बनाई, दैट फाइल आई वर्कड आउट कंप्लीटली, आई टुक लॉट ऑफ टाइम। And that file, there are four tables in that. One table is for adjustment of seats, means how many seats have been gifted by election commissioner to BJP unduly, means these should not go to BJP, but these are going to be BJP, and these are 135 seats in these three assemblies. And same way, votes are 36 crores. 36 crores votes have been counted, not practically but according to calculations, and that is arbitrary. This difference, this variation in cannot be done by EVM. I don't agree with that. This cannot come out by EVM. EVM is just a eyewash, only eyewash. Results of EVM have not been used perfectly. There must be result. I don't say no because they have vote percentage difference, so there must be result. But those results have been multiplied by some coefficient, particularly for BJP. I'm sure they would not do it for Congress because their objective is that BJP should lead. Those must have been multiplied by some coefficient, and that entry has been made into Excel sheet. 36 crore is impossible figure. In these three states, I think it should not be more than 10 crores or 9 crores at all. And there's about only 70% polling on an average. So you can say it should be further low, maybe 8 crores or like that, 7 crores. But these are 36 crores. So this is really not convincing. I'm really much stirred. My mind is stirred. I did not expect that much, but seeds gambling, or you can say seeds bungling. You call it BNG line. Bungling means हेराफेरी, corruption कह सकते हैं आप एक तरह से. But I don't understand what's interest of election commission in this case. मेरी समझ नहीं आ रहा कि election commission का क्या इसमें फायदा है. Except that election wants to please BJP, that can be other, or he's a person of BJP, that can be other point. इलेक्शन कमीशन का क्या स्वार्थ है? वो इंडिपेंडेंट आदमी है, इंडिपेंडेंट सीट पे बैठा है, कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी है, उसको क्या लेना देना कौन जीतता है कौन हारता है? उसका काम है इलेक्शन करा के रिजल्ट डिक्लेयर करना, बस इतना काम है ट्रांसपेरेंटली। उसे क्या लेना है? तो आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देते क्यों नहीं पब्लिक को? हम क्या चेक करें आपका? एक सिटीजन जो होने की, बिकॉज आई एम ए सिटीजन, आई एम क्वालिफाइड पर्सन, I have background of calculations. I am civil engineer. I have done a lot of calculation in my life. I understand what to be calculated. And every work is done according to calculations. Even in companies, account balance sheet is a calculation. So what's your problem, my dear election commissioner? Why do you want to hide? Why do you want to conceal this information which is of significance, much significance? Why do you hide that? Where is that information which can justify your results? Or you justify that you have done right, I'm wrong. You give me calculations. You give me details of all these votes polled and votes counted. You put that information on your website so that we can go through that. Otherwise, you have to accept this. I request, I pray, I appeal to excellent, our excellency, president of this country, your honor, chief justice of this country, and election commission, that you have to deliver this information. And if you cannot deliver this information, then election commission must be acted upon and disciplinary action must be taken. It may be privilege motion or whatever it is. It may be impeachment, or EC institution has to come out with clear picture. Otherwise, this election is fake.
Election is fake, I say simply. Cannot be accepted. I know people don't calculate this. I did not see any post, any information, any news that some person in this country must have done this, might have done this. Nobody did this. I don't have any information to my you can say which websites I browse or the newspapers I read, information at all. So it's a question mark. आपको सबको बुरा लग रहा होगा, पर्टिकुलरली बीजेपी वालों को। कांग्रेस वाले तो सो रहे हैं, मैं साफ कह सकता हूँ, दे आर स्लीपिंग। आई सेंड मेल टू राहुल गांधी आल्सो, but I think nobody bothers about this, or they may be very busy. These people, they're busy in their own way. Well, I just try to support someone. I'm not supporting any political party. I'm just saying there should be transparency. Voters' right should not be abused. That is my intention. Our adult suffrage, previously we used to call it adult franchise, I think, yes. Now it's called adult suffrage. Previously, in past, we used to call adult suffrage a franchise. This should not be abused. No one has got any right. An election commission is solely responsible for this. पूरा कार्य ये इलेक्शन कमीशन ने किया, तो उसकी ड्यूटी बनती है इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। मैंने मेल भेजी, 2 फाइलें बार बार भेजी, उन्होंने मुझे उसका आईडी रजिस्ट्रेशन का दे दिया, ये आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है। मुझे अच्छा लगा, चलो कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी। आई गॉट द रजिस्ट्रेशन नंबर। आई ट्राई टू सेंड मोर फाइल्स टू देम, and they said, okay, we have done this, we have already given registration number. People are working on that, officers are working, we have sent it to officers and we have sent to NSG portal. Okay, I tried to check that number, and I opened that site and tried to check number, and it simply said this number this complaint number does not exist. कंप्लेंट नंबर कह रहे हैं उसको, कोई बात नहीं, कंप्लेंट है, मेरी कंप्लेंट है आपसे, यस कंप्लेंट है, और ये कंप्लेंट आपसे ही नहीं है, मैं तो प्रेसिडेंट को भी की है और मैंने तो सीजीआई को भी की है, सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी। So complaint number doesn't is was done 1 time, 2 time, and I think what I wrote to them, this is show, this is your image, this is your screenshot. It's not giving. Says I got reply. Oh yes, we are sorry for your inconvenience. That portal is under updating, and we will do it later on. And still, it's under updation. See, regretful it is really. This is a new portal for complaints. New portal, and not even 1 month old. I think 1 month old, and it's being updated. Strange it is. Believe me, impossible. Election Commission is not genuine. Election Commission has not been working independently, not working impartially, is not working according to requirement of Constitution. खाता हूँ. Not working out in Constitution, and this is really regretful. I did not expect this, at least from this election commissioner. I thought that he should be professional. He understands how to count, how to record, how to publish, how to analyze. No analysis done anywhere. Public in the election commission means has to provide information to people. People expect election commission to be head of elections. Election commission during election time is considered independent authority. Nobody can question election commissioner. Election commission can question prime minister, can question government, can question independent people, can question political parties. Every right goes to election commission, has been given to election commission according to constitution. भारत के संविधान में, भारत के रूल्स में इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा आदमी होता है चुनाव के समय, सबसे बड़ा आदमी होता है, उसको क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, वो हर एक से क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अपना काम तो खुद ही करना होता है। इलेक्शन कमिश्नर को कौन समझाए, छोटा बच्चा तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, वो भी जानता होगा 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक नहीं, और अगर इतना सा काम नहीं कर सकते तो किस बात के इलेक्शन कमिश्नर।
किस बात की? क्या जरूरत है हमें 3 इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर वो इतना सा काम नहीं कर सकते, पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, सच्चाई नहीं बता सकते? If these election commissioners are not capable to provide information to people about truth, that's why I say life truth. If they cannot do this, then what is job description of election commissioner? In Constitution of India, it is clear responsibility of election commissioner to maintain roles of voters, or you can say roles of electorate, and to conduct elections free and fair with complete transparency. And if these election commissioners cannot do that, then why we are wasting money on these people, these officers, these authorities? What for? गुस्सा आए बेशक आए उनको, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है. I am waiting for their response if they can give. I'm sure I will not get any response, not at all. And that is the only reason that I wrote to Supreme Court. I wrote to President of this country. Maybe they take action. I can't say. But I am concerned, not because I am going to get some benefit, but because I want to see clear and transparent elections. And EVM is an issue here. Yes, it is an issue. I agree with that. EVM is not reliable equipment. First of all, I'm clear. You be clear that EVM is not reliable equipment or machine. A voter has got every right to make sure or to be ensured that to whomever one votes, that vote should go to that candidate, because vote is cast for candidate and not for prime minister or not for someone else, anyone else. Vote goes to candidate, and if voter is not sure to whom vote is gone, then what is purpose of voting? That's another question. अगर मेरा वोट मुझे ही नहीं पता कि जिसको मैं देना चाहता था उसको गया या नहीं गया, तो उस वोट देने का पर्पस क्या है? और अगर मशीन ने डिसाइड करना है कि ये वोट किसको देना है, तो मेरे वोट का क्या मीनिंग रहा? बस मेरा बटन दबाना मीनिंग है? बस नहीं. वोटर मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी confirm, yeah, his vote has gone to his desired candidate. और वो कैसे होता है? ईवीएम से नहीं हो पा रहा है. ईवीएम has failed. EVM has failed voter. EVM has failed election. EVM has failed democracy. EVM has failed this country. To an extent, elections are concerned. I'm not saying throw it away or don't throw it away, but we have to find a solution. And that solution is only how to how to make sure that voter knows his vote has gone to his desired candidate. अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते. इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. हम तो भाई कुछ नहीं है. मदर कहाँ? कुछ डेमोक्रेसी नहीं है. फिर हमारे सांसद बोल नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते विरोधी वाले, और हमारा वोटर नहीं जान सकता कि वोट कहाँ गया. तो क्या करें? कौन सी डेमोक्रेसी है ये? इसको क्या नाम दिया जाए? क्या ये इजराइल की डेमोक्रेसी है, या ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कुवैत की डेमोक्रेसी? कहाँ की डेमोक्रेसी है ये? संविधान ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन लोगों ने छीन लिया. कुछ भी बिल पास कर रहे हैं आजकल, करते रहे, इनकी मर्जी, इनका घर का राज है. वोटर की कोई चिंता नहीं इनको. वोट ईवीएम से ले लेंगे, जानते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इलेक्शन कमिश्नर महोदय, जो जिम्मेदारी आपकी है, क्वेश्चन तो आपसे होगा. हम प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं करने वाले, हम किसी से क्वेश्चन नहीं करेंगे. हमारा क्वेश्चन श्री 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 इलेक्शन कमीशन से है. आप 3 हैं वहाँ, एक नहीं, बच्चे नहीं हैं. आप बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, आप सेक्रेटरी लेवल के रहे. आप बताइए आपका क्या इंटरेस्ट है कि आप सिर्फ ईवीएम से वोट कराना चाहते? अगर आपको और पब्लिक को कॉन्फिडेंस, आप हो सकता है कॉन्फिडेंस हो, पब्लिक को विश्वास नहीं है, वोटर को विश्वास नहीं है, तो आपको उनको विश्वास में तो लेना होगा.
और वो विश्वास तभी आएगा जब वोटर समझ जाएगा कि उसने जिसको वोट देना है उसको वोट गया. Confidence can come only or earned by that voter only when voter is confirmed, voter knows to whomever he wanted to vote, she wanted to vote, that vote has gone to that, and that answer is only ballot paper. Perfect and masterful and foolproof answer is ballot paper. Why do you oppose that election, Commissioner Mode? What is your personal benefit? Why you are so inclined that there should be no ballot paper, only EVM? There may be interested prime minister, there will be interested government, there will be interested MPs or someone. I am not concerned. I don't be interested political parties. But what is your interest, Mr. Election Commissioner? You have to answer that or go for ballot papers, condemn EVM. It is your prerogative. You have to satisfy voter. Prime Minister shall not satisfy voter. Others shall not satisfy voter. Only you have to satisfy voter. Please do it and check all balance of votes which I have sent to you. That is very important because I consider these three assemblies election void. These are not reliable results. You have to prove that you have done your job, or else all the results are fake, must be rejected. Can you? You will not do, I know, but you have not done your job, or you have done your job by doing some illegal way, corrupt way, that is. That's all. इलेक्शन रिजेक्ट करो या प्रूव करो कि आपने सही तरह से काम किया है. कौन सी ईवीएम से कितने वोट मिले उनकी सारी लिस्ट दिखाइए, टैली दिखाइए कि जितने वोट आए उतने गिने गए, ईवीएम के रिजल्ट्स दिखाइए, एक एक सीट का दिखाइए. तब हम मानेंगे कि आपने, और वो डिफरेंस मिलना चाहिए जो परसेंटेज आपने पब्लिश की है. That should go in same way. You have to tally your counted votes with votes polled, and whatever publication you have done on your website, that should match with that. Only then we can say you have done your job. Otherwise, you have not done your job. And I don't know in past what had happened, what has happened. There's no record of past. Did you follow same way? Means you did your way, and you want to say, I just say lead and this candidate is one and there is no need of something. No, people should know what happened. Everyone should know what happened. Otherwise, this is not acceptable. I don't accept your three assemblies results myself as voter of this country. Though I don't belong to those assemblies, state assemblies, but I am citizen of this country, voter of this country, and even if I don't vote, I have every right to raise question. And I will raise a question, give details of each constituency balance sheet, and prove that you have done right job. Otherwise, all three assembly results are fake. I would say your arbitrary decisions, not justified decisions. Thank you very much, dear people. I hope you got it clear what I wanted to say. Jai Bharat.